Welcome students, Mrs. Talat Khushnood here, and today we are going to continue our previous chapter, China's Way to Progress. And the topic that we are starting with is decentralized economy. The gigantic Chinese social experiment does not only concern Asia, however, but the West too, which has always claimed to have found the final answer to the problem of man and civilization. For years, the Chinese have been striving to make the world realize through their official interpreter and personal friend of Mao, Edgar Snow, that there are other important things in life beside an increase in GNP. Basically, the Chinese economy is scattered in the whole country. Not it is controlled by one organization, but it is local based economy, and it is a huge experiment. Gigantic means बहुत बड़े पैमाने पे चाइनीज़ ने जो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सपेरिमेंट जो किया है, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड नॉट ओनली टू एशिया बट ऑल्सो वेस्ट. इट वॉज अ type of challenge for the West. Those who had always claimed that they have found all the solutions to the problem of man and the civilization. बहुत अरसे से चाइनीज़ जो हैं वो स्ट्राइव कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये रियलाइज़ कराने के लिए. अपने एक अमेरिकन फ्रेंड जो कि माओ के एक पर्सनल फ्रेंड थे, एंड ही वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ अमेरिका. हिज नेम वाज एडगर स्नो. थ्रू हिम they have always been trying to tell to the people that this is not the thing that is the most important thing for a country is not GNP. GNP means gross national product. शुरू से वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, दूसरे कंट्रीज़ को, कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो इंसान है और उसके बाद कुछ और है. और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट्स जो एक साल में कोई कंट्री जो है वो पैदा करता है, जिससे वो सरमाया हासिल करता है, that is not as important as the human beings are. So this was the message that was given by Mao through Edgar Snow to the whole world. The Chinese model cannot be analyzed according to the differences from the Western system. अब ये भी एक बात है कि वो इस चाइनीज़ मॉडल को इस तरह से जज नहीं किया जा सकता कि हम इसको वेस्टर्न सिस्टम के अगेंस्ट रख दें और इन दोनों का फिर आपस में मुआवजा करें. It involves an utterly different approach. This is totally different sort of thing. It is creation of new world and new man. The cities show the absence of automobiles, which is neither backwardness nor delay, but a rejection, to quote Robert Glennon. अगर आप चाइना में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स जो हैं या गाड़ियाँ शहरों में आपको बहुत ही कम नज़र आएंगी. ही सेज दैट एब्सेंस ऑफ दीज ऑटोमोबाइल्स इज़ रिजेक्शन. It doesn't mean that those people are not affording that, or they are still they are at the level that they can't afford, but this is the rejection on the side of their on the part of their people or the common people. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो ऐसे है ना, ये कोई ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले लिखा गया था. और उस ज़माने में ऐसा ही था कि वहाँ पे अगर आप उस दौर की कोई फ़िल्म उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि चाइनीज़ की जो रोड्स हैं वो साइकिलों से भरी हुई हैं. लोग साइकिलों को गाड़ियों वगैरह पे तरजीह देते थे. वन थिंग वॉज दैट एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, advertising, neon signs, and three fevers of money, alcohol, and sex. In fact, the things he is calling fevers, these are in fact the shortcomings of any nation. Money, alcohol, and sex. These are the three things that can make weak any country or any nation.
So, political control over the masses not only stops the exodus from the countryside but even manages partly to reduce the populations of cities. They have a complete control on the expansion of their cities because they have given people the same facilities in the countrysides as the people of the big cities are enjoying. So this is the thing that they have controlled their cities population. In the year 2000, China will still be a powerfully agricultural and peasant country. For its modernization will have occurred without a flight from the fields, which is the price paid by the West. Another very important thing, a very important point is being given by the writer here. एक चीज़ तो आप ये देखेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि इन द ईयर 2000 China's will still be a powerfully agricultural and peasant country. विल बी, उन्होंने इसके लिए फ्यूचर के वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो इट मीन्स के ये काफ़ी पुराना ऐसे है। वो ये कहते हैं कि 2000 ईयर तक भी चाइना जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री ही होगा, लेकिन इसकी मॉडर्नाइजेशन जो है वो खेतों को छोड़कर हासिल नहीं की जाएगी। एंड दिस इज़ द प्राइस विच हैज़ बीन पेड बाय द वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ही हुआ है। इन चाइना टू the average size of farming concerns is growing through the systems of communes with subdivisions into production brigades and teams, but the greater part of the peasant masses stay put and carry on their traditional intensive labor. तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है वहाँ पे कि कम्यून्स में उसको डिवाइड कर दिया है, एंड देन दीज आर सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स एंड ब्रिगेड्स एक्सेट्रा। और इंटेंसिव लेबर ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल दे गिव अ वेरी एक्यूट सॉर्ट ऑफ, बहुत शदीद किस्म की वो मेहनत करते हैं, और वो सेम वही मेहनत है जो वो रवायती तौर पे वहाँ पे करते चले आ रहे हैं। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड with considerable caution with a great care, so as to avoid upsetting the balance. But the essential point of the matter is that the agricultural labor, though possibly deprived of farming machinery, must not and does not want to be urbanized. अब ये एक लोगों के अंदर ख्वाहिश भी है कि they don't want to be urbanized in any case. They don't want to leave their place, they leave their land and go to the cities or to big cities to better their lives there, but is instead kept on the spot and incorporated in the local and small industries. But these people are very much attached to their land, as attached that they have made the small industries at their homes, and they like to involve themselves in these small cottage industries than to go somewhere else, or than to leave their place and go to some big cities. He does not flee to the cities because the industrial road passes through the technically oriented agricultural and decentralized industry. So this is because they can have all those things that are made or that are produced in those industries. Their raw material is taken locally. उन्होंने वो इंडस्ट्री वहीं पे लगाई है जहाँ पे इस चीज़ की किसी चीज़ की पैदावार होती है। मिसाल के तौर पे कपास के इलाकों में उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स लगाई हैं, और जहाँ पे शुगर केन बहुत होता है वहाँ पे उन्होंने शुगर मिल्स लगाई हैं। सो दिस थिंग इज़ कॉल्ड टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy since the great proletarian cultural revolution, has freed China from traditionally cumbersome bureaucracy, and developed the local enterprise to the greatest possible degree of independence.
The 26 Chinese provinces, which are made as much as even 44 kilometers apart, could for that matter subsist on their own in the event of war, while anybody invading the country would be literally drowned in the sea of the people. सो इस किस्म के इंडस्ट्री को बनाकर उन्होंने लोगों को एक बहुत शदीद किस्म की अफसरशाही जो है उससे बचा लिया है। और उसके साथ ही चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस आर देयर। 26 प्रोविंसेस पे मुश्तमिल ये कंट्री एक दूसरे से इसका मैक्सिमम जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 4400 किलोमीटर्स हो सकता है। दे कैन सबसिस्ट ऑन देयर ओन इवेंट इन द इवेंट ऑफ वॉर इफ़ एनी इमरजेंसी इज़ देयर। अगर कोई भी वहाँ पे मसला दरपेश आता है, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है, तो वो लोग लोकली अपने आप को वहाँ पे सेटअप कर सकेंगे और किसी दूसरे प्रोविंस से उनको मदद लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दैट इज़ क्वाइट राइट, दैट इज़ क्वाइट वेल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आज ही के दौर में, अभी रिसेंटली जो कोरोना की वबा फैली है, नो डाउट चाइना से स्टार्ट हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ने किस तरह से उसके ऊपर काबू पाया है, किस तरह से उन्होंने पूरे वुहान सूबे को क्वारंटाइन कर दिया और इतने बड़े कंट्री को के अंदर इस वबा को फैलने से बचा लिया। दैट इज़ अगेन अ रोल मॉडल फॉर अस। This brings to the human side of the Chinese experiment in creation of new world. Obviously, it's a creation of new world. It is simply a matter of providing that Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan that man's condition is a condition of war with everyone against everyone. These might be the remarks of some writer who criticized in a very cruel manner in his book Leviathan, whose name was Thomas Hobbes. वो उसके बारे में ये लिखता है कि इंसान की सूरत हाल यहाँ पे ऐसी है जैसा कि हर इंसान दूसरे के साथ जंग की हालत में है और हर वक्त है। ये बिल्कुल गलत साबित हो गई। What is taking place today in world's most populous country is therefore the education and re-education of man. Obviously, education is the most important aspect of any country to get a great advancement. और वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला अपनी कंट्री के अंदर जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया है वो है एजुकेशन एंड री-एजुकेशन. Re-education means to make it better, to better it. The heart of the matter is need to root out selfishness and bring into existence selfless, dedicated men whose happiness consists of serving their fellow men in the fullest sense completely of the human community, in a humanism at the service of collective warfare. China is striving to conceive modernization as a part of process of embellishment of the landscape, development of the people's cultural life for the benefit of all instead of for the benefit of placing the needs of man before those of the machine. That is very important human aspect of Chinese thoughts. वो कहते हैं कि हमने इंसानों का पेट भरना है, मशीनरी का नहीं। और फिर वो क्या कोशिश कर रहे हैं, कंसीव द मॉडर्नाइजेशन को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, बट इन अ वे दैट टू बी वाइल दे आर इन अ क्लोज रिलेशन और इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद देयर लैंडस्केप एंड नेचर. और ये आपको पता है बच्चों कि नेचर कभी भी किसी को, जो नेचर से दूर होता है, जो अपनी लैंड से दूर होता है, नेचर उसको कभी माफ़ नहीं करती, उसकी सज़ा उसको भुगतना पड़ती है. और दिस इज़ द वेरी कोर पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम. मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे लाइक पोल्यूशन, लाइक other you can call let's say that
ailments, different sort of drawbacks of human mind, इंसान की जो एक पर्सनैलिटी की डिटीरियोरेशन है वो चीज़, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो एक मॉडर्न मैन इस दुनिया में महसूस कर रहा है, मॉडर्न इंसान दुनिया में महसूस कर रहा है, उन्होंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की है. Here is what the Peking People's Daily has to say, commenting on Mao's famous maxim, rely on your own forces. National machines and equipments are not entirely indigenous, since they possess the number of foreign features. ऑब्वियसली कोई भी मशीनरी कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे एक वहीं की इंडिजिनस या लोकल चीज़ों से नहीं बनती, उसमें कोई ना कोई फॉरेन फीचर्स शामिल होते हैं. दे में रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर सुपीरियर टू द फॉरेन इक्विपमेंट एंड दे डोंट रिक्वायर मनी or at any rate very little and are capable of doing great things. उनको अगर किसी मशीनरी की ज़रूरत भी है या बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोकली होती है, लोकली मेड होती है, वो बाहर की मशीनरी से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मज़बूत होती है. So it takes much less time to use indigenous equipment which when not available can be promptly prepared. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि वो चीज़ जो उनकी कंट्री में नहीं है वो उसको फ़ौरन बनाने की पोजीशन में है. इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर एंड बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स. ऑब्वियसली जो चीज़ लोकली मेड होती है या लोकल तौर पे बनाई जाती है वो बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर. यू कैन लुक एट दिस सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कि बाहर की निस्बत वो ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बेहतर और सस्ती होती है. Finally, it can stimulate the revolutionary spirit of the masses, and with this revolutionary spirit, all difficulties can be overcome. और दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर ये जो एक जज्बा पैदा होता है, इससे अवाम के अंदर, मैसेस के अंदर वो जज्बा जो है अपनी लोकल तौर पे बनाई गई मशीनरी को इस्तेमाल करने का, बनाने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और this is the passion or this is the spirit with which you can overcome all sort of difficulties. यही वो जज्बा है जो आवाम के अंदर अगर पैदा हो जाए तो सारी जितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, that's all for today. Let's discuss one point that I think we skipped that. That was a saying of Mao's famous maxim, rely on your own forces. He is talking about their force of the people. He says that don't look for help of the foreigners or of the other countries, but rely on those things that you have within your country, or those forces or those strengths that you are having in your own country with your people. So that is very much important thing. So let's finish here today, and we'll complete this lesson inshallah next time, and at the same then we will also discuss some important questions and important aspects of this chapter. Allah Hafiz.